Hello and welcome back, friends, to another episode of Golden Whispers. Vikas Joshi inspires aspirations. Friends, this is a series of daily reflections that aspire to ignite your passions, broaden your horizons, and guide you towards a life filled with a purpose. So get ready to be uplifted and motivated every day with Golden Whispers. Vikas Joshi inspires aspirations and cultivate a journey of personal growth together. ये श्रृंखला आपकी प्रेरणाओं को जगाती है और आपके उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन कराती है. ये एक कोशिश है. दिस इज एन एफर्ट सो एज टू इम्प्रूव ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट. Before we begin with today's topic, friends, I appeal to all of you that if you love this series, please like, share, and subscribe as it motivates me to create more such content. So let's begin with today's topic. Today's topic is, friends, stop shrinking to fit in. You are made to blend in. You are made to shine bold. हम बचपन से ऐसे हो रहे, अरे रहने दो, थोड़ा एडजस्ट कर लो, accommodate हो जाओ, and what you are called a very accommodative person. Where is your individuality? You have not seen at all. So stop shrinking to fit in is a direct call to those who have been bending, twisting, editing themselves just to be accepted. है ना, लोगों ने अच्छा बोलना चाहिए, उनमें मेरे को रहना ही है. So it means don't dull your sparkle to match the room. जरूरत नहीं है, बिकॉज हर इंसान अलग है. डोंट प्रिटेंड टू बी स्मॉलर, क्वाइटर, मोर नॉर्मल जस्ट बिकॉज योर ट्रूथ मेक्स others uncomfortable. Since your truth is making others uncomfortable, don't get adjusted to the things. Fitting in might be, it might give a feel of safeness, that is, you might be safe, but it also costs your identity. आपकी आइडेंटिटी चली गई, क्या हो पता नहीं, लोगों के लिए क्या वैसे मैं जी रहा था. So that is what is happening. So this whisper reminds you that you don't need to be liked by everyone. No, it is not at all necessary. You need to be true to yourself. The more you shrink, the more world misses out on you. आपकी ओरिजिनलिटी दिख ही नहीं रही है, आपकी इंडिविजुअलिटी नजर ही नहीं आ रही है. So that is what is happening when you accept to shrink according to what others are saying. So in every home, every office or community, people are adjusting themselves just to survive. नहीं, अभी उनमें रहना है तो हाँ बोलता हूँ, क्या करूँ, उनको बुरा न लगे. ये कॉमन डायलॉग है घर घर का. A housewife may silence her dreams to avoid being called selfish. नहीं, झिकझिक नहीं चाहिए तो बात ही नहीं करूँगी. ये कौन सा तरीका है? Why can't we say that I will put up the truth in a proper way? सही तरीके से बात करूंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? Difference in opinion, it is unnecessary. Don't get shrinked in or accept others views just because you don't want. ये कॉमन डायलॉग जो हम सुन रहे हैं, नहीं नहीं झिकझिक नहीं चाहिए, वो मगजमारी नहीं चाहिए, क्या क्या ये शब्द है? What are these things? That is what you are making yourself to shrink in. No, you can always speak the truth, or you can always speak what is in your mind in a proper way. It is no necessity to shout or ridicule anyone. जैसे हम कहते हैं, नहीं नहीं तो मेरी पहली बात सुन, नहीं, ये कहने की जरूरत नहीं है. अपनी बात कहने के लिए ये सेंटेंस क्यों चाहिए? Why can't we speak in a proper way? Yes, we can. So that will help you not to get shrink into others' views. An employee may never speak up, so he is seen as a cooperative person, है ना? अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कई एम्प्लॉय होते हैं, नहीं नहीं बाबा कर ले, बस ये कर ले में यू हैव फॉरगॉटन योरसेल्फ. अपनी आइडेंटिटी चली गई. आप एक कोऑपरेटिव आदमी बन चुके हो. मतलब क्या है? यू हैव बीन टेकन फॉर ग्रांटेड. दैट इज द अदर साइड ऑफ द कॉइन. सो यंग मैन में act tough, but so no one mocks his sensitivity. That is important. But in all this, they disappear. Shrinking becomes a habit. And slowly, people forget who they really are. ऐसा होता है कहीं से. But life is not meant to be lived like a folded paper. You are designed to expand, not to fit in someone else's box. खुद की जिंदगी है तो खुद के विचार है.
सही तरीके से बात करोगे तो एवरीबडी विल लिसन। लेकिन अल्टरकेशंस में जाओगे या रिएक्शंस दोगे तो यू विल ऑलवेज बी ऑन द मोड ऑफ अल्टरकेशंस, झगड़े। और मेन बात तो कहीं और ही चली जाएगी। फिर यू विल कम बैक टू द थिंग, नहीं नहीं तो आई विल एक्सेप्ट इट, बाबा जाने दो, मुझे क्या करना है। ये क्या करना है, जिंदगी तुम्हारी है। तो आपकी जिंदगी के बारे में आपको ही करना होता है, किसने करना होता है। दैट इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड। डोंट श्रिंक इन बिकॉज समवन एल्स इज सेइंग समथिंग। द मोमेंट you stop shrinking and start showing up as your full self, the flaws, gifts, quirks, and all your confidence starts to breathe. सच्चाई आज जब बात करने लगोगे तो एवरीथिंग कम्स टू लाइफ। आपको भी लगेगा हाँ ये बराबर है। एंड देन योर कॉन्फिडेंस विल ग्रो। यू विल बिगिन टू say yes, I am different and that's my strength. You stop walking into the rooms wondering if people will like you. ये सोच है ना, लोग क्या कहेंगे, उनको अच्छा लगना चाहिए। आर यू लिविंग फॉर somebody else? नहीं नहीं, ये डायलॉग छोड़िए कि फैमिली में मुझे जीना है, ये सब ठीक है। बट व्हाट इज द प्राइम थिंग? इट्स यू दैट मैटर्स। बिकॉज अंदर उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आप अपने आप को बाहर नहीं निकालोगे। So do I like the energy here? That switch builds the unshakable confidence. तो आपको सोचना चाहिए क्या मैं फिट हूं यहाँ पर, नहीं, नहीं मुझे तो बात करनी चाहिए। Remember, we are talking on the base that we should speak the truth out. Don't oppose the thing for merely oppose. ऐसे भी होते हैं ना कुछ लोग, हाँ कोई हाँ बोलेगा तो ये ना ही बोलते रहते हैं। इनके पास कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता है। अब इनको लगता है कि मैं ऐसे ना जोर से बोलूंगा तो सब लोग मेरी सुनेंगे। कई बार सुना भी जाता है, दैट इज कॉल्ड इग्नोरेंस। But this person takes it in his pride. Now that is again going in the wrong way. So when you stop editing yourself to match others, you finally start attracting people and places that match you. देखो, 100 के 100 लोग आपको अच्छा नहीं बोलेंगे। Let us accept that fact. और अगर अच्छा बोल रहे then that is a very dangerous situation. Because difference in opinion, that is society, that is human being. But the way we put up, it may create a ruffle or it may create a get together, people coming together on one platform. ये हो सकता है, लेकिन बात कैसे कहोगे इस पे इंपॉर्टेंस है। लेकिन कहोगे, डोंट श्रिंक इन। श्रिंकिंग कीप्स यू स्टक। इट मेक्स यू डिनाई योर ड्रीम्स, योर वॉइस, योर यूनिकनेस जो है आपका। आई ऑलवेज से एवरी पर्सन इज यूनिक। भगवान ने हर एक को अलग बनाया है। हर आदमी के पास डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स है। जस्ट सी वॉच एनी ऑफ द टैलेंट शोज ऑन दिस टेलीविजन नाउअडेज। लोगों में कितना टैलेंट है। एवरी पर्सन हैज गॉट डिफरेंट टैलेंट। इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ वे दे डिफर, लेकिन है उनकी इंडिविजुअलिटी। सो व्हेन यू स्टॉप श्रिंकिंग, ग्रोथ एक्सप्लोर्स। You start expressing freely. You try new ideas. You take healthy risks. You become more authentic in your relationship and that heals you. सच्चाई पे अगर रिलेशनशिप रहेगी तो वो लॉन्ग टर्म रहती है फ्रेंड्स। सच्चाई में किंतु परंतु नहीं आता है, झगड़े होते हैं, बट दे आर ऑन द मैच्योरिटी लेवल। वी एक्सेप्ट द थिंग्स, we accept the other person's views, hence we accept the person. Now that person or you yourself are not shrinking into getting accepted by each other. No, you're putting up the good things for your betterment, for your better life. So personal growth isn't about being better than others, it's about being more of who you truly are, because that is also accepted. You're not here to perform for approval. नहीं नहीं, किसी का अप्रूवल लेने के लिए नहीं जी रहे हो, because that doesn't make any sense. लोगों ने मुझे अच्छा बोलना चाहिए इसलिए मैं ऐसे ही रहूंगा, श्रिंक हो जाऊंगा, एक्सेप्ट करूंगा, तो अकोमोडेट हो जाओगे। आपकी इंडिविजुअलिटी चली जाएगी, आपको भी पता नहीं चलेगा, एंड यू विल बी टेकन फॉर अ राइड बाय ईच एंड एवरी पर्सन। सो यू आर हियर टू लिव विथ अ पर्पस
And that purpose needs your full size, not your watered down version. श्रिंक हो चुके, कहीं एडजस्ट हो चुके, नहीं नहीं, ऐसा नहीं. वॉट एवर यू आर, इट इज अ गॉड्स गिफ्ट. जैसे आप जन्मे हो, आपके पास स्किल्स है, अब आपको एक्सप्लोर करना है. एक्सप्लोर तभी कर पाओगे व्हेन यू रिफ्यूज टू श्रिंक डाउन टू समवन एल्सेस व्यूज. स्टार्ट स्पीकिंग आउट व्हाट यू थिंक अबाउट. Let me remind you, we are talking on the base of speaking up the truth, speaking up the mind, speaking up your own view, not just for the sake of view, but to put up the things so that you are being watched at or looked at. So stop shrinking to fit in. You were born to take space. Stand tall. Speak clearly. If you have been hiding your light, step out. If you have been dimming your voice, turn it up, because the world doesn't need more copies, it needs more originals. It needs you. Fitting in is comfortable, आसान है, क्योंकि लोगों के हाँ में हाँ मिलाना और चुप रहना है. But it's too costly. The real you is always better than the fake version of someone else. Shrinking yourself is getting shrinking into others' views is taking your own individuality. Shrinking may please others, but it may wound your soul, your internal confidence. True belonging begins when you stop performing and start being. So, friends, don't shrink in. Say at as what your internal voice wants to say. Be what you are, than other person's copy. I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Golden Whispers, because Joshi inspires aspirations. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one time activity. Do enjoy.